Hello friends, welcome back to our channel Van Life Indian Couple. At the outset, आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना अप्रिशिएट किया. The aim of making this channel was to reach out to all like-minded people जो कि अपना caravan बनाने की सोच रहे हैं या बना रहे हैं, and to make a forum through which we can share our van build experience. Now taking you ahead from where we left in part 2. इस पार्ट में हम दिखाएंगे आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन एंड प्रोग्रेस ऑन वैन सीलिंग, इलेक्ट्रिकल्स, बेड लिफ्ट सिस्टम, किचन काउंटर एंड वॉशरूम. जैसे कि आपने हमारे फर्स्ट व्लॉग में देखा था, हमारी वैन में स्लाइडिंग ग्लास विंडोज लगे हुए थे. अब हमने उनकी जगह फिक्स्ड विंडोज इंस्टॉल करवाए हैं. The reason behind to install these windows is that they are made of toughened glass, जो कि safety and security के लिए बहुत important है. And it regulates the internal temperature according to the weather. Secondly, we have installed a roof carrier. It is made up of FRP, that is fiber reinforced plastic. This will give aerodynamic shape to our van and will protect our AC and vents. It will also be used to keep our camping gears. Thirdly, we got installed aftermarket car AC, which is over and above our Mac 10 AC. This will work when the van will be on move. यह AC दो एरियाज को कवर कर रहा है, एक कॉकपिट एरिया और दूसरा लिविंग एरिया. Fourthly, we have replaced manual windows with power windows. Reason to install this is to give safety and security. Lastly, हमने फाइबर के डोर पैनल्स फिट करवाए हैं और डैशबोर्ड को भी मॉडिफाई करवाया है. Now, we will give you an overview of rooftop. First is Mac 10 AC, then two vents जिसमें से लेफ्ट एग्जॉस्ट वेंट है जो किचन एरिया के ऊपर है और राइट वेंट वॉशरूम एरिया के ऊपर है. इसके आगे कार एसी का एक्सटीरियर यूनिट है. जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने इंसुलेशन की थर्ड लेयर लगा दी थी. टुडे वी विल शो यू our last and final layer of insulation. This is made up of PVC material जो कि wood false ceiling का alternative है. यह एक maintenance free, corrosion free, waterproof and fire retardant product है. इस PVC पैनल में ventilation के लिए perforated holes दिए गए हैं. These are flexible and can be easily installed through interlocking method. This comes with 10 years of warranty. Now coming to our bed area. हमने अपने बेड के बेस के लिए WPC wood plastic composite को यूज किया है. प्रॉपर वेंटिलेशन एंड हाइजीन के लिए बोर्ड में होल्स किए हैं. बेड के बेस में हमने पीवीसी फॉल्स रूफिंग लगाया है.
The bed lift system works on rail and block mechanism. यह बेड मैन्युअली या 12 वोल्ट के लीनियर एक्चुएटर से काम करता है. Now we will update you about our electricals. हमने अपने 12 वोल्ट अप्लायंसेस के लिए पाइल DC to DC कन्वर्टर यूज किया है जो कि 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है. अपनी वैन को थोड़ा मॉडर्न लुक देने के लिए हमने फैक्ट्री फिटेड स्विचेस को 6 गोंग रॉकर स्विच से रिप्लेस किया है. This is waterproof and it contains digital voltmeter display, dual USB charger and 12 volt breaker switch. कॉकपिट एरिया में हेडलाइनर के नीचे हमने डुअल USB चार्जर्स और सीलिंग लाइट्स लगाई है. इन सभी इलेक्ट्रिकल्स को ऑपरेट करने के लिए हमने वाईफाई टच पैनल्स लगाए हैं. These can also be operated by Alexa and smartphones. This is a small glimpse of lighting in our van. Now, some update on our kitchen counter. We have selected nano white marble for our kitchen countertop. इसको इंस्टॉल करने से पहले हमने यह इंश्योर किया कि यह प्रॉपर्ली हमारे सिंक एंड गैस हॉब के हिसाब से कस्टमाइज हो जाए. सिंक के आगे सबसे पहले RO वाटर फॉसेट इंस्टॉल किया है जो कि अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर से कनेक्टेड है. उसके साथ हमने फ्रेश वाटर के लिए पुल आउट वाटर फॉसेट लगवाया है. और साथ में सोप डिस्पेंसर और हैंड वॉश डिस्पेंसर लगवाया है. Next, we installed a 2-burner gas hob. This is the first look of our functional kitchen counter. A big size sink, keeping in mind Indian cooking requirements. RO water faucet, fresh water faucet, soap and hand wash dispenser, and 2-burner gas hob. इसके साथ साथ वुड वर्क भी प्रोग्रेस में है जैसे किचन कैबिनेट्स, बेड ड्रॉर्स, and window frames. Next is fitment of our recirculating toilet. This is a self-contained toilet with push button and quiet flushing. इसमें इनबिल्ट ब्लैक टैंक है जिसको हमने एक और एक्सटीरियर ब्लैक टैंक से कनेक्ट किया है. यह 12 वोल्ट पावर से वर्क करता है. It also comes with an indicator which shows
that when to empty the black tank. We have also made customized shower tray for bathing area. वॉशरूम के डोर के लिए हमने PVC स्लाइडिंग डोर सेलेक्ट किया है. This is waterproof and fire retardant and also lightweight. Friends, van build is still under progress. To motivate us to make more such videos, we will appreciate if you like and subscribe our channel. We will also look forward for your valuable suggestions. Next vlog will be coming soon. Till then, stay safe and stay healthy.